Namaste दोस्तों. In today's video, I'll be discussing 10 questions from this year's UPSC prelims examination that were directly or indirectly connected to our discussions in the classes. हालांकि मैं यहाँ कोई क्रेडिट लेने नहीं आया हूँ. I just want to say, if you have studied standard books such as NCERTs, especially class 11th NCERT, with sincerity and developed the habit of applying concepts to real world situation, then these questions would have been quite manageable, in fact solvable. और हाँ, जिन लोगों ने मेरी क्लासेस सिंसियरली फॉलो की हैं उनके लिए ये 10 क्वेश्चंस या तो करेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल था या एटलीस्ट कुछ स्टेटमेंट्स क्लियरली समझ के एलिमिनेट करना बहुत ईजी था, विच मेक्स अ रियल डिफरेंस इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. क्योंकि वहाँ पे एक स्टेटमेंट भी आपको 50-50 पे ला सकती है, दो स्टेटमेंट 25-75 के क्लैरिटी पे ला सकती है. तो दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो चलिए शुरू करते हैं. There's a concept called as solar wind. For example, in the corona, suppose this is the, say, corona. Now, in the corona, we have lot of plasma, that is superheated, supercharged particles, ionized particles. Now, when it is so much heated, it will become very lighter in weight. So, at times, what happens? These plasma, these charged particles from the sun's corona, they actually come out because they are so light that the sun's gravity is not able to hold it. Yes, they are so light. And these charged particles, when they travel far away from the sun, it is called as solar wind. Yes, these are called as solar wind. They become so light, they become so charged that they become very, very light. Even the sun's gravity cannot hold them back. So they will travel away from it. Now, at times what happens? The magnetic field, see, magnetic field of the earth, or magnetic field of the sun, it keeps, dwindling, it keeps traveling. So at times it also, reorganizes itself. So at times when it reorganizes, how does this happen? Again, not a very good pattern which scientists have found out, but yes, it keeps reorganizing itself. So at times what happens when it reorganizes the charged particles, the magnetic field, right? The charged particles plus magnetic field of the sun, it also comes out. It also comes out like a discharge. This is called as coronal mass ejection. From the corona, coronal mass ejections. CMEs, popularly called as CMEs. Called as CMEs. Now tell me, if this is the case, suppose this is the sun and from it solar winds or CMEs, कुछ भी हो सकता है, right? Solar winds or CMEs. Right? They are traveling, they are traveling in all the direction, probably say they also come towards Earth. Now what will happen is, Earth too has its own magnetic field. Say, this is say Earth, which has its own magnetic field. Yes, magnetic field. Now, when this charged particle will come and our magnetic field, it will protect us from these charged particles. Had we not have this magnetic field around us, because it acts like a protector, acts like a gorilla glass, right? Had it not been there, so what would have happened? All these charged particles would have come onto the surface of the earth, और फिर कुछ लाइफ पॉसिबल नहीं होती. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक और हाउ मेनी ऑफ यू यूज टू थिंक, फॉर एग्जाम्पल बचपन में मैं सोचता था हम सब अर्थ के अंदर रहते हैं. आई वॉज नॉट एबल टू इमेजिन कि हम ना अर्थ के सरफेस पे रहते हैं. I was very small, right? Like 2, 3, second or third class में. First time I got to know कि अरे हम surface पे रहते हैं, है ना? I was like हम गिरते क्यों नहीं हैं? Because all of those concepts I could not understand back then. So किसी ने सोचा था, बताओ ना यार. कोई नहीं सोचता था यार, बड़े समझदार थे सब. ठीक है. Now, these solar wind, coronal mass ejection, they keep coming towards the earth, and what will happen when they will come? They will interact
with the magnetic sphere of the earth, and lot of disturbances will be created. Now these disturbances are called as geomagnetic storm. Geomagnetic storm. These geomagnetic storms can also create wildfire, right? Yes? How? Huh? See, it is the magnetic disturbance. No, it is not. It will not create forest fires. Right? Because this was the question asked by UPSC, that geomagnetic storms can also lead to forest fire. No, ऐसा कुछ नहीं होगा. Probably it is going to disturb everything which works on the principle of electromagnetism. For example, mobile phones, radio, TVs, internet, satellites. Yes, all those things which work on the electromagnetism, they will be disturbed. Right? I think 10 years back there was a geomagnetic storm. और आता ही रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है. मिलेनकोविच साइकिल. Now tell me, this is sun and this is earth revolving around the sun. Now there was a scientist called Milankovitch. He suggested कि अर्थ का जो ये पाथ है, ऑर्बिटल पाथ अराउंड द सन, इट इज वेरी मच elliptical in nature. There is perihelion, aphelion, difference in the distance between sun and earth. Now this distance can actually keep changing. At times it can become like more elongated, कुछ ऐसा बन सकता है, it can become like this, yes, more elongated, or it can become more circular, eccentric. Don't you think as soon as the orbit changes, the impact on earth would be changing? So this happens in lakhs of years, thousands of years, it can happen. He also suggested, say the earth you have, this earth is actually tilted. Now this tilt can actually change. Right now it is how much? 23.5 degrees. He suggested it can dwindle between 21 to 24 degrees तक ऐसे से dwindle कर सकता है. But what if it becomes straighter? Don't you think? The sun will always remain or say more towards the equator. It will not go toward the tropics. जहाँ पे 23.5 पे है. Suppose it becomes 21 degrees Celsius, 21 degrees tilted. Then the maximum tropics it will go towards 21 degrees north and south. So इसका मतलब poles will become cooler. हाँ जी. So Milankovitch cycle, the rotation of the earth probably can change, revolution path can change, axial tilt, eccentricity, बहुत कुछ change कर सकता है over thousands of years of time, lakhs of years of time. This will also change the solar radiation received by the earth. This is your Nazca plate, which is say oceanic in nature. It is your South American plate, which is continental in nature. Now tell me, Nazca is going this way, the South America plate is going this way. Oceanic and continental. Now tell me, if these two plates are interacting, which is bound to subduct? Nazca plate is bound to subduct. Suppose now, this is your Nazca plate subducting under South American plate. Nazca plate will melt. Everybody please look at me. Nazca plate will melt. All the magma will come in the form of volcanic peaks, and obviously all the sediments being scrapped on this accretionary prism that is called as fold mountain. So some of the features we will find there. Let's see, do we get these features or not? Because of this, you will find here all along the western part of
South America, start from here. A fold mountain, a mountain chain, it is called as Andes. All along the western coast of South America, everybody please look at me. All along the western coast of South America, you will find a deep trench called as Peru-Chile Trench. Peru-Chile Trench. Now, all along this Andes Mountains, you will find many volcanic peaks. Many volcanic peaks such as Mount Ecuador, Mount Cotopaxi, excuse me, Mount Aconcagua, which is the highest peak of South America, Mount Ozos del Salado, Mount Chimborazo. Now, can I give you a homework here? Arrange these peaks from north to south. Andes, you see this Andes? Now, this is just from Stephens of Panama to Strait of Magellan, एकदम नीचे तक आएगा. अच्छा, फोल्ड माउंटेन सिस्टम कैसे बना है? बिकॉज ऑफ CNO. एक तरफ क्या है आपका पैसिफिक, दैट इज योर कौन सी प्लेट थी? रिमेंबर द पार्ट ऑफ द पैसिफिक, छोटी कौन सी प्लेट थी? नास्का प्लेट इट इज. गुड. एंड दिस इज द साउथ अमेरिका विच इज कॉन्टिनेंटल. दोनों मिले तो बिकॉज ऑफ द स्क्रैपिंग दिस माउंटेन हैज बीन created. Now, zone of frequent earthquake because you understand plate tectonics. ठीक है. Now here we have again this homework I gave you earlier, but probably you have not done this. मैंने बोला था Rockies पे Andes पे there are lot of peaks. Those peaks को north to south you have to write down, like Cotopaxi, Chimborazo, Ozos del Salado, Aconcagua, etc. Now Mount Cotopaxi वहाँ पे है, then उसके नीचे Mount Chimborazo you have, then Mount Aconcagua, और बीच में यहीं पे Ozos del Salado भी है. Ozos del Salado भी बीच में है. ठीक है. These are three. लेक टैंगानिका कहाँ पे है? दिस इज द पार्ट. नीचे था आपका, हाँ ठीक है, तंजानिया, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, बुरुंडी एंड जाम्बिया. दीज आर दी कंट्रीज अराउंड दिस लेक टैंगानिका. ठीक है. सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम एंड डेप्थ आफ्टर लेक बाइकाल. बाइकाल कहाँ पे है? सर ठीक है, वेरी गुड, रशिया. बट सर अपवेलिंग नहीं होगा तो न्यूट्रिशन एक्सचेंज नहीं होगा ना. हाँ, यस, इट इज अ प्रॉब्लम देयर इफ इट इज नॉट अपवेलिंग. इट्स और से वाटर डू नॉट गेट मिक्सड अप, सो प्रोबेबली लॉट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स कमिंग फ्रॉम द लैंड आल्सो. तो ऐसा समझो कि न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है, बट यस उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाकी जगहों पे है. सो दिस इज इट. ठीक है. नाउ हियर दिस इज योर से हाई प्रेशर से हरमट्टन इज ब्लोइंग दिस वे. नाउ हियर दिस इज द कोस्टल रीजन. इस कोस्टल रीजन में इट इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. ठीक है. इक्वेटर वाला रीजन है. इक्वेटर वाला रीजन है, राइट, बिकॉज इक्वेटर पासेस थ्रू हियर. ऐसे देखो, है ना, इक्वेटोरियल रीजन है. तो इक्वेटर रीजन में इट इज ऑलवेज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. हॉट एंड ह्यूमिड की वजह से व्हाट हैपेंस देयर, जहां पे भी वार्म और ऐसी ह्यूमिड कंडीशन होगी, यू विल फाइंड दैट कि भाई दिस इज द प्लेस वेयर यू विल हैव लॉट ऑफ डिजीजेस, है ना. हॉट एंड ह्यूमिड वाली कंडीशन में लॉट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जैसी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब होगा. नाउ as soon as this wind it reaches there, it is coming from desert area, तो ड्राई तो होगा and comparatively थोड़ी सी कोल्ड है. तो कोल्ड है और ड्राई है. now it reaches there and it sucks up the excess moisture there. जितना भी excess moisture होगा इसको suck up कर लेगा अपने अंदर, right, because cold and dry, तो it has lot of capacity to suck in. ठीक है. तो suck कर लेगा सारा. now here the weather becomes very decent, very very अच्छा वेदर बन जाएगा. हाँ, दे एक्चुअली इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल, क्योंकि जैसे ही इंप्रूव अच्छा हो जाएगा, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस गई, ऑल दिस मलेरिया मच्छर चले जाते हैं. ठीक है. सो दिस विल एक्चुअली मेक द पीपल बेटर इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो कॉल्ड एज
डॉक्टर विंड, ठीक है, डॉक्टर विंड. और जो इधर से करंट जाई थी लाइक सिरोको वगैरह, एंड दिस साइड यू हैव व्हाट, हाँ सपोज मेडिटेरेनियन. सो व्हाट विल हैपन, दे आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यूरोप, सदर्न यूरोप में जा रहा है. दीज आर वेरी डस्टी विंड्स, क्योंकि सहारा से है. डस्टी विंड से क्या, ऊपर से मेडिटेरेनियन के ऊपर से जा रहा है. सो मेडिटेरेनियन से दे विल सक सम मॉइस्चर, और उनके पास डस्ट पहले से है. नाउ दे विल गो देयर एंड रेन डाउन इन द सदर्न यूरोप. सदर्न यूरोप पे जब रेन करेंगे ना, इट्स वेरी मडी रेन. एक तो रेड कलर की सैंड, ऊपर से मॉइस्चर, वो सारा का सारा दे हैव एक्चुअली precipitated down there. So it will be looking like almost a blood rain. So they also create blood rain. Not Hermatan, the other Sirocco I am telling you. Blood rain. About this is about Sirocco, Leveche, है ना, Ghibli, Khamsin, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. So blood rain. This is say equator, that is the continent, and say sun is here. Tropic of Capricorn. Now tell me, if I say कि here on the land there is say winters है, right? यहाँ पे winters है. On the land say it is your, यहाँ पे suppose somewhere 10 degree Celsius. 10 degree Celsius. On the waters it would be, on the same location it would be warmer or cooler. It would be warmer or cooler. Warmer, right? So suppose यहाँ पे 13 होगा, 13 degree Celsius, 13 degree Celsius. So for 10 degree Celsius to match on the water, it has to go a bit up towards the poles. So here you will find 10 degree Celsius, 10 degree Celsius. And opposite like this, नीचे भी कर सकते हैं. So this is how your isotherms are moving. They also move with the apparent movement of the sun. अब बताओ, with this discussion you can solve that question or not? जो इस साल पूछा था, आपको याद भी है कि नहीं याद है? There was a question, बहुत लोगों ने गलत कर दिया उसको. They thought it is very very difficult. But with this discussion, do you think you can solve that question? नहीं किया तो आज जाके करके देख लेना, ठीक है? So any confusion? नहीं. Because of the atmosphere, we have an ambient temperature. That means here we have an ambient temperature. What does this mean, ambient temperature? This means the earth does not get cool very much on its extreme side, and also does not get very warmed up. So there's a very narrow range of temperature in which we all are living. So that ambient temperature is maintained, so life is possible. Now tell me, this is ideal, and this is say earth is moving from say, this is your west to east. अर्थ तो ऐसे ही रोटेट कर रहा है, राइट? यस, ऐसे ही रोटेट कर रहा है, अभी हमने देखा वेस्ट टू ईस्ट इट इज रोटेटिंग. सो टेल मी एनी प्लेस लोकेटेड हियर, से whatever countries are here. Now tell me, these places will have say, probably say they will have say Monday है, but here it will be still no, here it is say Monday. So they will be, because this is the ideal, यहां से न्यू डे स्टार्ट होगा, राइट? डोंट से वेस्टर्न ईस्टर्न, मैंने कुछ नहीं बोला अभी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. जैसे मैं ले चल रहा हूं वैसे चलो, एट द एंड फिर वेस्टर्न ईस्टर्न, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर करेंगे, बिकॉज इट इज स्टिल कंफ्यूजिंग, आई नो. नाउ टेल मी, अभी जैसे ही मूव करेगा, सपोज सन इज हियर, जैसे ही मूव किया, सपोज यहां पे न्यूजीलैंड है, नाउ दे विल हैव अ न्यू डे, सो दैट इज व्हाट, ट्यूसडे. दैट विल बी ट्यूसडे. बट से कोई और यहां पे प्लेस है, सपोज हवाई, सपोज देयर इज हवाई, यहां पे स्टिल इट इज मंडे. Now tell me, if someone jumps from east to west, that means someone is going or someone is crossing ideal. So this is say ideal, this is say ideal. Now someone is, this is east, obviously this is west, everyone easy. Now if someone is crossing ideal from east to west, what will happen? मंडे था,
और जैसे उसने इधर कदम रखा, इट इज ट्यूसडे, सो वॉट एवर मंडे ही हैड, है ना, वॉट एवर से हाउ मेनी आवर्स इट वॉज, it is gone. He is in Tuesday now. So tell me, is he losing a day or not? जो पूरा मंडे he could have worked, right? 90 hours का वाला, ठीक है, he could have worked hard. But अभी क्या, he is in Tuesday now. So tell me, he has lost a day or not? So he'll lose a day. Lose a day. But what if someone crosses the ideal from west to east? West to east. Tell me, it is Tuesday here, and then he jumps here. It is still Monday. He says, okay, fine. Yesterday was Monday, and today is also Monday. So he can enjoy the Monday 2 times, which nobody wants to. ठीक है? तो Monday 2 बार enjoy करेगा. That means he is gaining a day. चलो, he actually loses a day, gains a day. Lithium is used very much in batteries, in electromagnetic और बहुत तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में we are using lithium, and lithium is very important, and India has been importing lithium from South American countries, Chile, Bolivia and all these countries. They produce a lot. But lithium is found in India. Now, lithium triangle in South America, the other day we were talking about कि lithium सबसे ज़्यादा कहाँ पे है. So these 3 countries probably, see, ABC, ठीक है, Argentina, Bolivia and Chile. These 3 countries. Region of Andes, lithium reserves found around the borders Argentina, Bolivia and Chile. Atacama Desert के पास से various salt pans that exist along Atacama Desert and neighboring arid areas. It can be mixed of rock or processed from brine. So rock और फिर brine से निकलता है. And the problem with Indian lithium is it is clay based. तो इसीलिए it is not very much economically viable. However, technology के साथ probably we can have. ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बोनाफेसियो, अगेन ये कहां से कनेक्ट करता है? यू सी दिस कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में देयर वाज अ स्मॉल गैप था. दिस स्मॉल गैप इज कॉल्ड, नाउ लेट मी टेल यू, दिस कोर्सिका वाला जो आइलैंड है इट इज फ्रांस, और जो सार्डिनिया है इट इज इटली. सो एक तरह से ये क्या है, दिस स्टेट ऑफ बोनाफेसियो इज आल्सो बिटवीन फ्रांस एंड इटलीज आइलैंड कॉल्ड एज कोर्सिका एंड सार्डिनिया. डिफरेंट फुटबॉल टीम अब तो सबके नाम पे है, ठीक है, जो जितने भी ये ESL वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है. यू सी कोर्सिका एंड सार्डिनिया, यू सी देयर स्टेट ऑफ बोनाफेसियो. तो दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनके कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में सिस्टमेटिकली कवर किए हैं बहुत ग्रेट लेंथ में. ये डिस्कशन और ये अप्रोच सिंसियरिटी, रियल लाइफ एप्लीकेशन और अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स not only help you in prelims examination but will keep helping you across all stages of this examination, be it prelims, mains or the interview. और याद रखिए, जो क्लास 11th ज्योग्राफी की NCERT है, आपके लिए गीता, बाइबल या कुरान इस तरह से होनी चाहिए, जो भी आपका बिलीफ हो. उससे सिर्फ पढ़िए नहीं, समझिए और अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करिए. अभी आप बहुत आपाधापी में मत पड़िए, कट ऑफ के ट्रैप में मत फंसिए. 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए और फिर अपने आप को री एनर्जाइज करके वापस से मेंस एग्जामिनेशन के लिए लगिए. बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी अहेड. थैंक यू.